So this is the paper that we are starting May-June 2022, paper 5, variant 2. So this is the first S1 paper that I'm doing in this session this year. So I've already covered a number of papers last year as well. You would find in the recording, find in the description, links to a number of different playlists that you would find helpful for your revision close to the exam. So I've uploaded all of my recordings for the crash courses that I recently did for paper 1, paper 3, M1, and S1. And also you'll find some useful quick revision videos. There's a link to that as well. And also a number of different past papers that I solved last year from 2020 and 2021. You would find them in the description as well. All right, so let's begin then. So this is the paper that we are starting with today, S1. Again, as I say every single time, please make sure that you watch one particular video, at least, that's on tips and guidelines while you're attempting all of these different papers, making sure that you understand all of these instructions that are given in every paper so that you are following them as they're supposed to be followed. So I would not be going through these instructions every time I do a paper. I would assume कि आपने एक दफा वो go through कर लिया और आपको instructions का पता है. So I'll just be starting with the paper directly. Let's start with this paper then. This is the paper that came last year to your seniors. यही variant आता है आपके पास यहाँ पे पाकिस्तान में. Variant 2. Let's begin with this and start with question number 1. It says for n values of the variable x, it is given that sigma x minus 200 is equal to 446 and sigma x is equal to 6846. These are the two things that we're given. We need to find the value of n in this case. Okay. Now, remember, we've done this, that whenever you have something like this written, sigma, and then inside that you have some expression in terms of x, जहाँ पे x minus या x plus something लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, इसको किसी और लेटर से denote कर देना. So let's say this thing is y. Okay, so this is that linear transformation problem. आपने अंदर वाले part को किसी और letter से denote कर दिया. So now what you have is y equals x minus 200. And what happens in cases like these, जो relation y और x का होता है, वही relation आपका इनके means का भी होता है. So mean of y and mean of x are also related like this, कि mean of y is equal to mean of x minus 200. Okay? तो आप क्या कर सकते हो, आप इन दोनों pieces of information को use करके आप कह सकते हो कि इनका means का ये relation होना चाहिए. Now let's find the mean of x. Mean of x का क्या formula होएगा? Sigma x over n. What about mean of y? Mean of y is going to be sigma y over n. Now mean of x is going to turn out to be sigma x over n. So let's write that down here. 446 divided by n. That is something that we have to figure out. X bar turns out to be this. What about y bar? Mean of y, sigma y. Okay, I'm sorry, I'm doing it wrong. Sigma x is 6846, not that. You can write that here. 6846. Sigma x की value 6846 है यहाँ पे. What about sigma y? Sigma y is going to be this. अगर आप x minus 200 को y assume करो, it becomes sigma y equals 446. You input that here, 446 divided by n. All right, so you have both x bar and y bar here. अब आप क्या करोगे, ये relation use कर लोगे, क्योंकि y और x में ये relation है, इनके means का भी ये relation होगा. You would say y bar equals x bar minus 200. And from this equation, you can find the value of n. Let's input values here. Y bar is 446 over n. X bar is 6846 over n minus 200. We just need to solve this equation. This would give us the value for n. We can multiply the whole equation by n. That gives us 446 equals 6846 minus 200n. And you can see what n turns out to be from this. 200n equals 6846 minus 446. Do this on your calculator.
6846 minus 446 divided by 200, and that is giving me n equal to 32. That's the value of n that we were looking for. So linear transformation wali koi bhi problem aaye, it becomes pretty straightforward. If we just assume this thing, whatever is inside the brackets, assume this as another, denote this by another letter, और फिर जो भी इन दोनों वेरिएबल्स का रिलेशन होता है वही इनके मीन्स का भी रिलेशन होता है, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कहीं पे आ रही हो तो उसमें क्या होता है, इनको स्टैंडर्ड डेविएशंस इक्वल होती हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस इक्वल होती हैं दोनों की, और मीन्स का वही रिलेशन होता है जो उन वेरिएबल्स का रिलेशन है. लीनियर linearly जब related होते हैं तो this is how we deal with them. Okay, let's move on. That was question number 1. Simple application of linear transformation. Let's have a look at the second question now. It says a fair six-sided die has the numbers 1, 2, 2, 3, 3, 3 on its faces. The die is rolled twice. The random variable x denotes the sum of the two numbers obtained. Draw up the probability distribution table for x. अच्छा देखिए उसने x वेरिएबल को कैसे डिफाइन किया. उसने कहा x is the sum of the two numbers obtained. So you're rolling two dice, and x represents the sum of the two numbers obtained. The numbers on the dice are not 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's 1, 2, 2, 3, 3, 3. Okay, so it's a different dice. It's not a standard dice, it's a different dice. Okay. So be careful about that. आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं यूज करना. अब sum के लिए आपने टेबल बनाना है. Okay, so probability distribution table का क्या मतलब होता है? You need one row in which you have some values for x, and you have another row in which we have the probabilities corresponding to those values of x. So this is how the table is going to look like. आप इस तरह से एक टेबल बना देंगे, इसमें x और probability of x की values लिख देंगे. Now, what are the possible values of x you could have from this? Maximum number आपका क्या हो सकता है? दोनों दफा आप 2 दफा रोल कर रहे हो तो मैक्सिमम नंबर आपके पास हो सकता है वो 6 हो सकता है कि दोनों 3 आ जाएं. दोनों 3 आ जाएंगे तो क्या होएगा? 6 मैक्सिमम नंबर हो सकता है. What's the smallest number you can get? You can get 1 twice, दोनों दफा 1 आ जाए, 2 दफा आप रोल करें, दोनों दफा 1 आ जाए. The smallest number you have in this case would be 2. So x की possible values क्या हो सकती हैं? You can have 2, 3, 4, 5, 6. Right? These are the possible values for x. यही values लिखने का आपको 1 मार्क तो मिल जाएगा. ठीक है. अब आपने क्या करना है, इनके corresponding probabilities लिखनी है. Now, how do we write down probabilities corresponding to this? That's what you need to think about. अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप ये सारे combinations logically सोचें कि अच्छा 2 कैसे आ सकता है, 3 किस तरह से आ सकता है. अगर तो सिर्फ एक कैलकुलेशन करनी हो ना, इनमें से आपने ये फाइंड करना हो या सिर्फ ये फाइंड करना हो, कोई भी एक कैलकुलेशन अगर सिर्फ करनी हो, उसमें तो आप डायरेक्टली लॉजिकली सोच के कर लें, दैट विल बी क्विकर. However, since you have to find 5 of these probabilities, it's worth it to just spend a minute to draw up a table. That will make things a lot simpler. Table बना लें, addition table. I hope you guys know about that. आपने O levels में भी किया हुआ है. Addition table बना लें इस तरह का, उसमें सारी values लिख लें. It will make things extremely simple. So you can have a table like this. क्या numbers possible हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 3, and 3 again. Okay, so these are the numbers that you can have. Now make sure to write those numbers उतनी ही दफा जितनी दफा वो आ रहे हैं, right? Okay, अब 3 मल्टीपल टाइम्स आने की प्रोबेबिलिटी भी तो ज्यादा होगी ना, तो आपने उसको 3 दफा ही लगना है इस टेबल के अंदर. Now let's draw up this addition table. क्या हो जाएगा? 1 plus 1 is 2, 1 plus 2 is going to be 3, so you have 2, 3, 3, and then 4, 4, 4. These are the values that you have in this table like this. Okay, 2, 3, 3, 4, 4, 4. ये आपकी addition यहाँ पर होगी. You'll have exactly the same thing on the other side. 3, 3, 4, 4, 4. वही pattern यहाँ पे बन रहा होगा. अच्छा, 2 plus 2 क्या होएगा? 4, then 4, 5,
5, 5. We'll have the same thing here, 4, 4, 5, 5, 5. And the next one is going to be 4 again. So 4, and then 5, 5, 5, 5, 5, 5. 3 plus 3 is 6. So you have 6, and then 6 again, and 6 again. In fact, ये सारी values ये बाकी जो रहेगी ये 6 आ जाएंगी. ठीक है, आप 1 मिनट इस पे स्पेंड कर लेंगे, कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा इसके बाद. ठीक है, आपको क्या करना है, 2 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन टोटल 36 आउटकम्स है आपके पास. 2 कितनी दफा आ रहा है, सिर्फ एक दफा आ रहा है. So probability of having a 2 here is 1 over 36. Out of 36 possible outcomes, only 1 is 2. So you say this is 1 over 36. Okay, 3s कितने आ रहे हैं, 2 and 3, 4. You have 4 3s here. You'd say this is 4 over 36. आप इसको as it is लिख दें. That's okay. You don't have to simplify this. Table में जो values लिखते हैं ना, it's better to just write them as it is. Check करना भी आसान होता है कि उनका sum 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा. अच्छा, next you have 4 4s count कर लें कितने आ रहे हैं. You have 4 4s here, and then you have 3 here. So that's 7, and 3 here. That's 10. You have 10 4s in total. So the probability here is going to be 10 out of 36. 5s देख लें कितने आ रहे हैं. You have 6 here and 6 here. So that's 12 in total. 12 out of 36. And you have these 6s. These are 9 in total. So that's 9 over 36. That is what your probability distribution table is going to look like. Now, drawing this thing, this addition table that I've drawn, this is not necessary. However, it makes your calculation a lot simpler and a lot safer as well. Aapke mistakes ke chances bahut kam ho jate hain. And just to verify that your calculations are correct, you can just add these numbers up and see कि अच्छा 1 आ रहा है total के नहीं आ रहा. 15 plus 21, yeah. So 36 over 36, the total turns out to be 1, which means most likely your calculation is correct. Okay, so that's the probability distribution table that we were looking for. Now it says find the expected value of x and the variance of x. Now that's pretty straightforward. जब आपका probability distribution table होता है, इसके formulas हमारे पास होते हैं. All you have to do is just apply those formulas directly, and you would get your results. Expected value of x का formula हमारे पास है sigma xp, right? It's given in the formula sheet. Sigma xp, और variance of x का formula हमारे पास होता है sigma x square p minus expected value of x whole squared. आपको स्टैंडर्ड डिविएशन अगर निकालनी है वैसे वो प्रोबेबिलिटी टेबल के साथ नहीं पूछता. अगर फाइंड करनी हो तो इसका स्क्वायर रूट होता है वो. बट दिस इज द वेरिएंस. यू हैव टू जस्ट इनपुट वैल्यूज इन दिस. ऑलराइट, अब आप क्या कर सकते हैं, वन पॉसिबिलिटी इज आप उसी टेबल में 2 रोज ऐड कर लें. दैट माइट मेक थिंग्स इजियर, लेकिन आपने उनको इरेज नहीं करना बाद में फिर. ठीक है, बिकॉज सेकेंड पार्ट की वर्किंग आप एक तरह से ऊपर शो कर देंगे टेबल के साथ ही. तो एग्जामिनर विल चेक दैट एज वेल. ओके, आपने वर्किंग अगर ऊपर टेबल के साथ ही करनी है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू लीव दैट वर्किंग देयर. डू नॉट इरेज दैट और कैंसिल दैट आउट एट द एंड. दैट विल बी चेक्ड विद द सेकेंड पार्ट. आपको क्या चाहिए, सिग्मा एक्सपी, तो आप एक और रो ऐड कर लें विच इज एक्सपी. एक्सपी को मल्टीप्लाई कर लें. दैट गिव्स यू 2 out of 36, and then 12 over 36, 40 over 36, 60 over 36, and 54 over 36. And then you just add all of these values up. That's going to give you sigma xp. Let's add them up together and see what that gives you. 2 plus 12 plus 40 plus 60 plus 54, and that gives us 168 over 36. Okay, that's what we are getting for sigma xp. Okay, this is sigma xp. यहाँ पे लिखते हैं 168 over 36. Let's write that down here. This is 168 over 36. You can evaluate this and see what that turns out to be. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाता है 14 over 3. या डेसिमल्स में लिखना हो तो आपको एटलीस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको लिखने होंगे. वो आप देख लें आपके पास क्या आता है. दिस इज 4.66666. दैट्स 4.67. ओके, व्हाट अबाउट द वेरिएंस? उसके लिए आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर पी चाहिए. वो आप एक टेबल में ऐड कर लें. टेबल में ऐड कर लें एक्स स्क्वायर पी. ओके, एक्स को स्क्वायर करना है पहले, फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है.
Let's do that. 2 squared, that's 4. 4 into 4 over 36. 4 into 1 over 36, that gives us 4 over 36. Let me do it in a different color. So this is 4 over 36. Then you have 3 squared, that's 9. 9 into 4 is 36. 36 over 36. Then 16 into 10, that's 160. 160 over 36. And the next one, 25 into 12, that is giving me 300. So that's 300 over 36. And then finally, we have 36 into 9, which is 324 over 36. And then you just add all of them up. That is going to give you sigma x square p. Okay? ये evaluate कर ले, ये आप देख लें आपके पास क्या आता है. Let's add them up together. 4 plus 36 plus 160 plus 300 plus 324. And this turns out to be, let me do that again. 4 plus 36 plus 160 plus 300 plus 324. That's 824 over 36. That's sigma x square p. ये आप यहाँ पे लिख दें, इस फॉर्मूला में इनपुट कर दें. 824 over 36 minus ये एग्जैक्ट नंबर यूज करें ताकि आपका आंसर सही आए वहां पे. 14 over 3 whole squared. Just evaluate this and see what you get from this. Okay, so this is giving me 10 over 9. So that's your final answer here. You can leave it like this, or if you want to write this in decimals, this would be 1.11111. So that's 1.11 like this. That's the variance that we have in this case. Okay, so that's the second thing that we were looking for, variance of x. Let's move on. Question number 3. So you have a back-to-back stem and leaf diagram that shows the diameters in centimeters of 9 cylindrical pipes produced by each of 2 companies, A and B. We have the key given for this as well. 135.3 means the pipe diameter from company A is 0.351 centimeters. Now, be careful about this. So these are all numbers in decimals. The stem here gives you the first 2 decimals, and the leaf gives you 1 decimal, the last third decimal place. Okay. So that's how you're going to read these values. You have this given here. It says 19 cylindrical pipes are produced by each of these 2 companies. So the total number of values that you have in both of these cases is 19. In each of these cases is 19, total 19. Okay? Now we need to find the median and the interquartile range of the pipes produced by company A. अब देखें, this is ungrouped data. This is ungrouped data. Ungrouped data में, please remember that you cannot use those formulas n over 2, n over 4, 3n over 4. You cannot use those formulas. वो आपने नहीं apply करने यहाँ पे. Sometimes you will get correct answers from that. However, at other times, you would not be getting correct answers from that. Okay, so please do not use these formulas for ungrouped data. ये group data के लिए use कर सकते हैं, लेकिन ungrouped data के लिए नहीं use करना है. ठीक है, ungrouped data में आपको क्या करना होता है? For the median, you can use n plus 1 over 2. What's the total number of values that we have here? The total number of values is 19, so it's going to be 19 plus 1 over 2, and that gives you 10. So the 10th value is going to give you the median. Okay, the 10th value is going to give you the median. Up company A का आपको चाहिए median और interquartile range, तो median क्या हो जाएगा ये आप जाके देख लेंगे. Remember stem and leaf diagram में values आपकी sorted होती हैं. Company A की बात हो रही है तो values are sorted from right to left इस तरह से. ये order है इनका. ठीक है, हम count कर लेते हैं. So you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10th place पे आपके पास ये आ रहा है. This is going to be your median. Now, what exactly is this value? आप कैसे लिखेंगे इस value को? Keep in mind the key. So it's a value in decimal, 0.35 and then 5.
This is the median that you have here, 0.355. What about the interquartile range? Now there's a specific method that we use for finding the upper quartile and interquartile, upper quartile and lower quartile in ungrouped data. And that works like this. Median आपके पास आ गया है. Median has divided your data into two parts. एक part आपके पास आ रहा है median के लेफ्ट साइड, एक साइड के ऊपर इससे लोअर वैल्यूज, और एक पार्ट आ रहा है इसके अपर, इससे बिगर वैल्यूज. दीज आर द टू पार्ट्स दैट यू हैव. इन दोनों के आप मीडियंस निकालेंगे तो वो आपको देंगे लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल. ठीक है, तो आपको येलो पार्ट का मीडियन निकालना है, वो आपको देगा लोअर क्वार्टाइल, और ग्रीन पार्ट का, ग्रीन शेडेड पार्ट का मीडियन निकालना है, वो आपको देगा अपर क्वार्टाइल. ठीक है, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क. अब कितनी वैल्यूज है दोनों पार्ट्स के अंदर? यू हैव 9 वैल्यूज इन ईच ऑफ दीज फॉर टू पार्ट्स. इन दोनों में 9 वैल्यूज है. 9 वैल्यूज में मिडिल वैल्यू कौन सी होगी? फिफ्थ वैल्यू. You can again use this formula if you want, n plus 1/2, keeping in mind that your n now is going to be 9. So 9 plus 1/2, that's going to give you fifth value. दोनों shaded parts में fifth value अब देखें क्या आती है. अच्छा, फर्स्ट में देखते हैं येलो पार्ट में 1 2 3 4 5. This is the fifth value that we have. This is going to be the lower quartile. 8 is going to be the lower quartile. This is the lower quartile. यहाँ पे लिख लेते हैं. Lower quartile is 0.348. What about the upper quartile? अब आप ये दूसरे पार्ट में देखेंगे, ग्रीन वाले पार्ट में, इसमें फिफ्थ नंबर पे कौन सी, इसके मिडिल में कौन सी वैल्यू आ रही है? 7 8 2 5 6. So this is the middle value, fifth number पे आ रहा है. This is upper quartile. Upper quartile is 0.366, and therefore the interquartile range turns out to be 0.366 minus 0.348, and that gives you 0.018, and that is the interquartile range that we were looking for. Okay. All right, let's move on. That was the first part, pretty straightforward again. अभी तक काफी आसान questions आ रहे हैं. Let's look at the next part. Waqar, unfortunately, not right now. I don't have S2 videos at this point, but I will be trying to do that next year, hopefully, if I get enough time. Let's see. Okay, now it's given that for the pipes produced by company B, the lower quartile, median, and upper quartile are 0.346, 0.352, and 0.370 respectively. अब company B के उसने आपको lower quartile, median, or upper quartile बता दी, and these are the values that you have. We need to draw a box and whisker plots for companies A and B on the grid below. अब देखें, आपको box and whisker plots के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं? You need 5 values. Now let's write down those values for each of these one by one. आपके पास एक company A है, दूसरी company B है. What values do we need for the box and whisker plot? We need the minimum value, we need the lower quartile, we need the median, we need the upper quartile, and we need the maximum value. These are the values that we want. Okay. Now, what's the minimum value for A? आपको जाके stem and leaf diagram में देखना पड़ेगा. A के minimum value 0.334 आ रही है. Let's write that down. Lower quartile हमने find किया है. Lower quartile was 0.348, and then median is 0.355. Upper quartile is 0.366, and maximum value, they can look at the stem and leaf diagram again. This is the maximum value that we have, 0.374. These are the values that we have for company A. Now let's think about company B. Uski kya values aa rahi hain? Lowest value is this one, that's 0.331. Then the next three values are given. Lower quartile is 0.346. Median is 0.352. Upper quartile is 0.370. Maximum value आप जाके देखें stem and leaf diagram से. This is the last value that we have, and that is 0.388. This is 0.388. These are all the values that we have. अब आपने क्या करना है? Box and whisker plot बनाने हैं. इस same diagram के ऊपर you need to draw 2 box and whisker plots. Okay.
Now, how can you draw those two boxes and script plots here? आप ऊपर नीचे बना देंगे. Remember, इसमें वो तो मैटर नहीं करता. वर्टिकल स्केल पे, वर्टिकल एक्सिस पे कुछ भी नहीं होता. आपके पास बॉक्स एंड स्क्रिप्ट प्लॉट में सिर्फ एक ही एक्सिस होता है. अब उस एक्सिस के ऊपर लेट्स राइट डाउन वैल्यूज. ओके, अब देखें लोएस्ट वैल्यू आपकी कहाँ पर आ रही है? 0.33 समथिंग, और फिर मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हैं? 0.388. सो दैट्स 0.39. 0.33 से 0.39 तक आप अपना स्केल ले सकते हैं. ऑलराइट, सो यू कैन से let's start from 0.33 here, and then you could have 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, और ये पूरा हो गया हमारे पास 0.39. अब एक दफा चेक कर ले पहले पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो बेहतर होता है. वैसे भी आपने ये पेंसिल से करना होता है ताकि आप कुछ अगर गलत कर दें आप इरेज कर सकें, बिकॉज यू ओनली हैव वन ग्रिड, आपके पास और ग्रिड नहीं होती, तो यू हैव टू मेक दिस इन पेंसिल, ड्रॉ दिस इन पेंसिल. अच्छा, तो अब आपने हॉरिजॉन्टल स्केल को लेबल करना है. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दिस होल पेपर. इसमें लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू एंड अप लूजिंग मार्क्स इफ यू डोंट लेबल थिंग्स प्रॉपर्ली. ओके, तो ये हमारे पास आ गया एक्सेस. इस एक्सेस पे आपके पास क्या आ रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट वाज द वेरिएबल? पाइप डायमीटर. पाइप डायमीटर सेंटीमीटर्स के अंदर यहाँ पे लिख देंगे दिस इज डायमीटर इन सेंटीमीटर्स. ओके, अब आपने क्या करना है? उन पॉइंट्स को प्लॉट कर देना है फॉर कंपनी ए एंड कंपनी बी. वी हैव दीस पॉइंट्स रिटन ऑन द लेफ्ट साइड. 0.334 ए के लिए प्लॉट करना शुरू कर दें. आप कोई भी एक लाइन चूज कर लें. so let's say मैं इस लाइन के ऊपर कर रहा हूँ, इसके ऊपर आप पॉइंट्स प्लॉट करना शुरू कर दें फॉर कंपनी ए first. अच्छा, 0.334. So that point is here. That's one thing. 0.348. That will be here. You have 0.355. That's right here. 0.366. That is here, and then you have 0.374. That's right here. ये आपने 5 points plot कर दिए. Let's do the same thing for the other one as well first. उसके बाद फिर हम इस पे आते हैं. इसको डायग्राम पे ड्रॉ करने पे उसको हम इस लाइन में कर लेते हैं. 0.331. So the first value is here. And you have 0.346, which is right here. 0.352. 0.370, and then finally you have 0.388. That's going to come here. आपने करना क्या है? जो sides वाले points हैं, you're going to join them using straight lines like this. You have to use a ruler for this. Okay. ये आपने straight line से इनको join कर देना है, sides वाले points को. Let me actually use thinner line here. ओके, साइड्स वाले पॉइंट्स आप इस तरह से ज्वाइन कर देंगे यूजिंग लाइंस. इसी तरह से दूसरी साइड वाला आपने ज्वाइन कर देना है यूजिंग अनदर लाइन. ओके, दिस टूल इज नॉट वर्किंग हियर. लेट मी सी व्हाट आई कैन डू अबाउट दिस. मेबी वन स्मॉलर. ये आप एक लाइन बना देंगे यहाँ पे इस तरह से दोनों साइड्स पे, और दरमियान में आपने एक बॉक्स बना देना है. उसकी विड्थ मैटर नहीं करती, बस आपने दोनों बॉक्सेस के लिए सेम विड्थ रखनी है. दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. दिस इज व्हाट द बॉक्स लुक्स लाइक. ठीक है, और फिर जब दरमियान में है पॉइंट आ रहा है जो, उसमें आपने एक वर्टिकल लाइन इस तरह से बना देनी है. ठीक है, we join the points on the sides, on the two sides with horizontal lines. सेकंड और फोर्थ पॉइंट के दरमियान में बॉक्स बन जाता है, और बिल्कुल सेंटर में you have another line like this that represents the median. Okay, so that's the box plot for the first company. Let's label this. इसको label करना जरूरी है, otherwise कैसे पता चलेगा कौन सा किसको represent कर रहा है? This is company A. Let's do the same thing for the other one now. Sides वाले points को आपने line से join कर देना है. So we have a line here and another line here on the side. और फिर आप क्या करेंगे? दरमियान में एक बॉक्स बना देंगे सेम विड्थ का. जो भी विड्थ आपने एक बॉक्स के लिए रखी है, दोनों बॉक्सेस के लिए वही विड्थ रखनी है, चेंज नहीं करनी, अदरवाइज दैट वुड नॉट मेक सेंस कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है दोनों में. ओके,
Okay, I'm sorry, I just need to be a bit more accurate there. Oh, why? Okay, I'm sorry about that. There's something wrong with OneNote when I use when I draw something on a PDF using a shape. इसमें क्या मसला है? It takes a few iterations. Okay, still not very accurate, but I think it's okay. We'll work with it. So it looks like this. ठीक है. अब दरमियान में एक vertical line बना देंगे. This represents the median. These are the two box plots that we have. इसको भी आप label कर देंगे. This is box plot. This is for the company. ये आपने draw करना था second part के अंदर. This gets you 3 marks. Now the second part says, the third part in fact, the third part says, make one comparison between the diameters of the pipes produced by company A or company B. All right. Now, how do we think about this? Remember, whenever they ask you to make a comment like this, आपने क्या करना होता है? एक आपने सोचना है central tendency का, right? एक central tendency का सोचना है, और दूसरा आपने सोचना है कि कितना जो है वो कितनी वेरिएंस है, वेरिएशन किस में ज्यादा है. तो किस में ज्यादा वेरिएशन है और किस में जो है वो ज्यादा या कम, उसकी एवरेज किसकी ज्यादा या कम है. बॉक्स प्लॉट से आपको जो मेजर्स पता चल रही होती है. सेंट्रल टेंडेंसी मेजर आपको यहाँ से मीडियन मिल रही होती है, तो या तो आप दोनों के मीडियंस को कंपेयर करेंगे. अगर आपने वेरिएशन पे कमेंट करना है तो वेरिएशन के लिए वी कुड either use the interquartile range or we could use the range. दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. रेंज भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, इंटरक्वार्टाइल रेंज भी यूज कर सकते हैं. तो आपने दोनों में से कोई एक कमेंट कर देना है. अगर हम एवरेज पे कमेंट करते हैं तो आप देखें, अच्छा इसमें ना आपका जो कमेंट होना चाहिए इट शुड बी कॉन्टेक्चुअल, के क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो आपने वर्ड्स यूज करने हैं अपने आंसर के अंदर. तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? दे आर टॉकिंग अबाउट डायमीटर्स, pipe diameter of these companies. तो आप क्या कहोगे? On average, now where is this word average coming from? From the median. So median का देख रहे हैं, that's a central tendency measure. Central tendency measures क्या होती हैं? वो आपको एक average का number दे रही होती हैं, right? On average, we say the diameters, the pipe diameters for company A are greater than those of company B. This is one possible comment that you could do here. अब देखें A का जो median है, A की जो average है, that is greater than the average of B. So you'd say on average A के जो pipe diameters हैं वो B के pipe diameters से ज़्यादा हैं. That's one possible comment. इसमें इसने एक ही कहा हुआ है. कभी वो दो कमेंट्स करने कभी कह देता है, तो फिर आपको एक कमेंट एवरेज पे करना होता है, दूसरा आपको करना होता है डिस्पर्शन के ऊपर या स्प्रेड के ऊपर, वेरिएशन के ऊपर. तो वो आप क्या कर सकते हैं? दूसरा कमेंट इसी के अंदर, if you were to do another one, वो आप क्या करते हैं? You would say the pipe diameters for company A या B कह लें, for company B are more varied as compared to those for company A. इन दोनों में से कोई भी एक कमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है. सो कॉन्टेक्चुअलाइज करना बहुत जरूरी है कि आप पाइप डायमीटर्स आप उसको रेफर कर रहे हो. ये नहीं कि बस ये एक डेटा, फर्स्ट डेटा का मीडियन ज्यादा है, सेकंड डेटा का मीडियन कम है, ये कमेंट करेंगे तो वो एग्जामिनर को लगेगा बस आपने याद किया हुआ है, बस वो सेम लाइन लिख के आ जाते हैं. आपने कॉन्टेक्चुअलाइज करना है क्वेश्चन के हिसाब से. दे टॉकिंग अबाउट पाइप डायमीटर्स, तो आपने कहना है पाइप डायमीटर ऑफ दिस कंपनी is on average greater or smaller than the other one, या फिर इस कंपनी के जो पाइप डायमीटर्स हैं उनमें वेरिएशन ज्यादा है as compared to the pipe diameters of the other company. Okay.
So that's what you would write here. Let's move on. Have a look at the question, the next question now. That's question number 4. It says, the weights in kilograms of bags of rice produced by Anders have the distribution. This n represents normal distribution. So it's a normal distribution. Remember, इस notation के अंदर आपके ये numbers क्या represent कर रहे होते हैं? The first number represents the mean and the second number represents the variance. Okay, so it's mean and variance like this. We need to find the probability that a randomly chosen bag of rice produced by Anders weighs between 1.98 and 2.03 kilograms. देखिए आपको डेटा दिया हुआ है, आपको मीन भी दिया हुआ है और आपको स्टैंडर्ड डिविएशन भी दी हुई है और आपको x की वैल्यूज भी दी हुई हैं. आपको फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. दिस इज सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. आपको डेटा यूज करके टेबल में उसको पहले जी में कन्वर्ट करना है, फिर टेबल से जाके प्रोबेबिलिटी देख लेनी है. ठीक है. नाउ लेट्स थिंक अबाउट दिस. हम ये कैसे करेंगे? Let's write this down. Write the given information down. First of all, mean is equal to 2.02. What about the variance? Variance is equal to 0.03 squared. उसने इस तरह से लिखी हुई है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगी? वो सिर्फ 0.03 हो जाएगी. 0.03 का स्क्वायर रूट नहीं लेना आपने, वो ऑलरेडी उसने 0.03 स्क्वायर रखा हुआ है. तो 0.03 आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन होगी इस केस के अंदर. अब आपको प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है? दैट रैंडमली चोजन बैग weighs between 1.98 and 2.03. So this is the probability that we're looking for. अगर हम इस weights को हम x से denote कर दें, तो what we're saying is x should be between 1.98 and 2.03. ये probability हमें figure out करनी है. Now how do we start with this? The first thing we do is we convert this to z. इसको पहले z में convert कर लें. How do we do that conversion? Z equals x minus mu over sigma. पहले तो इसको z में convert कर लेते हैं. It becomes z is between x, which is 1.98, minus the mean. Mean हमें क्या दिया हुआ है? 2.02, divided by sigma, which is 0.03. अच्छा, अब दूसरे साइड पे आ जाएं. 2.03 subtract from that 2.02 divided by 0.03. ये probability आपको figure out करनी है. Let's figure out the values of z first of all that we get from this. 0.04 divided by 0.03. This is giving me minus 1.333. Remember, जो आपकी z की values होती हैं, आपको वो लिखनी होती हैं to 3 decimal places, because that's what is given in the table. 3 decimal places. दूसरी से क्या आएगा? 0.01 over 0.303. That's going to be 0.333. These are the values of z that we're getting. Now we're going to think about the normal distribution table and see कि अच्छा उसमें हमें कौन सा region चाहिए उस curve के अंदर. Let's draw a normal distribution curve here. अच्छा, so this is how the curve looks like roughly. Center में you are going to have 0 because that's what the mean of z is. Z जो standard normal होता है उसका mean 0 होता है. Center में बिल्कुल 0 है. तो आपको find कौन सा area करना है? एक negative value है, so one value is here on the left side. That's, let's say, minus 1.333. This is one value. And the second one is 0.333. So that is on the right side here, 0.333. This is the region that we are looking for. Yeah, this is kind of the most complicated of the 6-7 different cases we have in simple normal distribution. ये area कैसे calculate करेंगे अब? Let's do it step by step. So we start from this. We say एक तरीका क्या हो सकता है? Remember आपका जो table होता है ना उसमें सिर्फ ये values दी होती हैं. Table में आपके पास सिर्फ ये form होती है, probability of z less than some positive number. अगर आपके पास ये फॉर्म नहीं है, आप टेबल नहीं यूज कर सकते. ये तो वैसे इंटरवल है, इस इंटरवल को खत्म करके आपने ये फॉर्म लेकर आनी है इस तरह से. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस. आप इसको पहले तो कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से. आप कह सकते हैं इस ग्राफ को देख के कि अच्छा ये शेडेड रीजन में जो चाहिए, आई कुड रिप्रेजेंट दिस लाइक दिस. आई कुड से
Let's find the area to the left of 0.333. इसके left वाला ये सारा region find कर लेते हैं, ठीक है? So let's find all of this region, ठीक है? How would you write that down here? You would say this is probability of z less than 0.333. ये आपने find कर लिया. अब इसमें क्या मसला है? इसमें आपके पास extra area आ रहा है. ये तो आपको ये पूरा region दे रहा है, ठीक है? So we have some extra region here. उसको हमने minus करना है. इसमें से हम माइनस कर देते हैं एरिया टू द लेफ्ट ऑफ -1.333, तो हमें दरमियान वाला येलो रीजन मिल जाएगा. so इसमें से वी सबट्रैक्ट z लेस देन -1.3333. ये हम इसमें से माइनस कर देते हैं. that is going to give us that yellow shaded region. Okay, now the problem is ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया. This is this form, z less than a positive number. This is already in the standard form. ये दूसरा नंबर है, this is not in the standard form. इसको आपने अब कन्वर्ट करना है. अब इसका फिर आपको सोचना पड़ेगा. इसके लिए आप इस तरह सोचने दोबारा से. You have this curve, okay? दरम्यान में आपके पास 0 आता है. .333 लेफ्ट पर आ रहा होगा, -1.33 इधर कहीं पर आ रहा होगा. आपको करना क्या है? इसके लेफ्ट साइड वाला रीजन फिगर आउट करना है. सो दिस इज द रीजन दैट वी वांट टू फिगर आउट इन दिस केस. हमें ये वाला रीजन चाहिए इस सेकंड केस के अंदर. हाउ डू यू फाइंड दिस रीजन? अब सबसे पहले तो ये नेगेटिव नंबर आता है, तो हम इसको क्या करते हैं? हम इसको फ्लिप कर लेते हैं. हम इसको राइट साइड पे ले जाते हैं. हम कहते हैं अच्छा, दिस रीजन इज द सेम एज द रीजन दैट यू हैव ऑन द अदर साइड हियर. जो ये वाला रीजन होगा ये उतना ही होगा. तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं. उसमें हम कहते हैं कि अच्छा, दिस थिंग इज द सेम एज, इसको हम साइड पे कर लेते हैं. दिस थिंग probability of z less than -1.333, this is the same as probability of z greater than 1.333. ये जो पॉजिटिव वैल्यू आपके पास है 1.333, इसके जो राइट पे एरिया है यूजिंग द सिमेट्री ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसके राइट वाले एरिया भी वही होना चाहिए. तो ये ग्रीन वाला रीजन इज द सेम एज दिस रीजन. तो आपने उसको उसमें कन्वर्ट कर लिया. इसका क्या फायदा हुआ? जो नंबर है आपके पास ये पॉजिटिव हो गया. बट वी स्टिल डोंट हैव दैट फॉर्म येट, बिकॉज यहाँ पे हमें चाहिए लेस देन अ पॉजिटिव नंबर. तो आप क्या करेंगे? अब हम कहेंगे टोटल एरिया 1 होता है, 1 में से माइनस कर दें 1.333 के लेफ्ट वाला सारा रीजन, तो ये राइट वाला आ जाएगा. That's what we do next. We write this as 1 minus probability of z less than 1.333. And that is going to give you this part. Okay? तो अब आपके पास क्या हुआ? ये फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गई? You have probability of z less than 0.333, which is fine. हम ये टेबल से देख लेंगे जाके. Subtract from that this case. ये हम यहाँ पे जाके इनपुट करेंगे. ये क्या आएगा? 1 minus probability of z less than 1.333. This is something that we can calculate from, that we can find from the table now. ये दो वैल्यूज आपको टेबल में जाके देखनी है. 0.333 पे देखना क्या वैल्यू आती है, और 1.333 पे देखना क्या वैल्यू आती है. Let's look at 0.333. Let's see if I have a table here. Normal distribution table. Yeah, okay, I have it here. Let me get rid of the stuff from here. Okay, एक हमें देखनी थी वैल्यू 0.333 के ऊपर. So we have 0.3 here, and then 3 here, and then another 3 here. This is giving us 0.6293. And then how much do we have to add here? We have to add 11 at the end. ये आप देख लें क्या आता है. It's going to be 0.6304. Okay, ये आपके पास ये पहला वाला नंबर आ गया 0.6304. Let's write that here. 0.6304. What about the second number now? ये आपके पास आ रहा है 1 minus something. 1.333 पे आपने देखनी क्या probability की वैल्यू आती है. Let's look at the table again. 1.333 पे जाके देखते हैं. Okay, now we have 1.3 and then 3 again here.
This is giving us this number 0.9082, 0.9082, and then we have to have another number here, that's 3. इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? End पे 5 ऐड करना पड़ेगा. End पे 5 ऐड कर दें, that gives you 0.9087. Okay, that's the other number that we're getting. Let's put that here. 0.9087. Now you just evaluate this and see what that gives you. 0.6304 minus 1 plus 0.9087. You can figure out what this turns out to be, and that will give you the probability that you're looking for. 0.6304 minus 1 plus 0.9087. This turns out to be 0.539. That's the probability that we were looking for. Okay, that was the first part of this normal distribution question. Now that was pretty long for 3 marks, so that was a bit harsh, but that's what we have to do here. Okay, let's move on. Look at the second part now. In the second part, it says the weights of bags of rice produced by binders. Okay, so there was one company earlier, or maybe it was some person, I don't know. This is another person or a company. The weight of bags of rice produced by binders are normally distributed with mean 2.555, 2.55 and standard deviation sigma. In a random sample of 5,000 of these bags, 134 weighed more than 2.6 kilograms. We need to find the value of sigma from this. Okay, so now we have another normal distribution. And in this normal distribution, we know that the mean is equal to 2.55. Sigma is not given. Sigma हमें figure out करना है. Sigma के value हमें figure out करनी है. However, we are given some information about probability. उसने क्या कहा है? 5,000 का sample अगर हम लें, उसमें से 134 जो हैं, वो 2.6 kg से ज़्यादा weigh करते हैं. तो अगर हम weights को x से denote करें, तो हम क्या कह सकते हैं? Probability of x being greater than 2.6. What is that going to be? That's going to be 134 over 5,000. Right? That's the probability that we get from this, 134 over 5,000. Let's see what this number turns out to be. Probability of x greater than 2.6, 134 over 5,000. This is giving me 0.0268. आपको ये probability given है, आपको करना क्या है? आपको sigma find करना है. So this is inverse normal, right? आपने अब inverse direction में जाना है, probability पता है, वापस आपने data में से कोई missing information figure out करनी है. So you have to use inverse normal here. Now, how does this process work? हम सबसे पहले क्या करते थे इसमें? We would say probability of z greater than something, that is equal to 0.0268. That is what we know. The very first thing we have to figure out is कि क्या z की value यहाँ पे positive है या negative है. Okay? आपने क्या करना है? इसका मतलब है sign का, you're looking at the right side. आप देखेंगे right side पे area जो है कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है. Compare it with 0.5. Right side पे जो area है, that is less than 0.5. तो अगर आप normal distribution curve देखेंगे, this is what the curve might look like. Z को आपने कहीं पे place करना है इसमें, या तो सेंटर के राइट साइड पे, पॉजिटिव साइड पे, या लेफ्ट साइड पे, नेगेटिव साइड पे. Z पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अगर आप इसको नेगेटिव साइड पे प्लेस करते हैं इधर, तो Z के राइट साइड पे आप देखें कितना एरिया है, तो ज्यादा एरिया है 0.5 से, तो Z नेगेटिव साइड पे नहीं हो सकता. तो Z को हमें कहाँ पे प्लेस करना है? Z के राइट साइड पे कम एरिया होना चाहिए. Z के राइट साइड पे कम एरिया होना चाहिए. तो आपको Z को किधर प्लेस करना पड़ेगा? इसको इस जगह पे प्लेस करना पड़ेगा. दैट मींस द वैल्यू ऑफ Z दैट वी हैव इज पॉजिटिव. ओके, सो एंड पे जब आप Z की वैल्यू लिखेंगे, आपने पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है. अब हमें पता क्या है? हमें ये पता है कि जो ये रीजन है इसके राइट साइड वाला, ये कितना है? दिस इज 0.0268. दिस रीजन इज 0.0268. ओके,
अगर ये 0.0268 है, रिमेंबर हमें टेबल यूज करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए होती है. व्हाट्स द स्टैंडर्ड फॉर्म? z लेस देन अ पॉजिटिव नंबर. दिस इज नॉट दैट फॉर्म. आपके पास ग्रेटर का साइन आ रहा है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि अच्छा राइट साइड पे 0.0268 प्रोबेबिलिटी है, व्हाट अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑन द लेफ्ट साइड? 1 में से ये माइनस कर दें, 1 minus 0.0268 and see what that gives you. This turns out to be 0.9732. So what you can do now is you can say probability of z less than that positive value z, that is equal to 0.9732. We know that z is positive now, and this is a less than sign. This is the standard form now. अब आप जाके टेबल से देख सकते हैं इस probability के against what's the corresponding z value. Okay, 0.9732. Let's go to the table. यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 0.9732. This is the probability that we have. This is z value देखनी है. 0.9732 ढूंढते हैं टेबल में. Okay, we have the exact number here, 0.9732. तो इसमें आपको खास सोचना भी नहीं पड़ा. 1.9 from here and 3 from here. The value of z turns out to be 1.93. Okay, let's go back here. यहाँ पे क्या कहेंगे? z turns out to be 1.93. अब आप फॉर्मूला में वैल्यूज इनपुट कर दें. रिमेंबर z पॉजिटिव था, यहाँ पे हमें देखना होता है आके z का साइन इनपुट करना होता है. We know that z पॉजिटिव ही हमने लिया था, तो इसको पॉजिटिव ही रहने देंगे ऐसे. Now we just input values in the formula that we have. Z equals x minus mu over sigma. What does that give us? X की वैल्यू यहाँ पे क्या थी? 2.6. Mean was 2.55 divided by sigma, and that equals 1.93. यहाँ से आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी. ये देखिए आपके पास क्या आता है? 0.05 divided by 1.93, and that is giving me 0.0259. 0.0259. That's the standard deviation that we were looking for. All right, so that was question number 4 from this paper. Let's move on. Question number 5. It says, in a large college, 28% of the students do not play any musical instrument. 52% play exactly one musical instrument, and the remainder play 2 or more musical instruments. A random sample of 12 students from the college is chosen. Find the probability that 9 of these students play at least one musical instrument. Okay, so now how do we think about this? Now, first of all, we need to figure out, can we classify as one of those distributions that we have, binomial, geometric? अब देखें, उसने कहा है a random sample of 12 students. तो उसने n identify, n आपको specify कर दिया. Total number of times आप कोई चीज repeat करें, आपको 12 students choose करने हैं. ठीक है? 12 students choose करने हैं. अब उसमें हमने probability निकालनी है of having more than 9 of these students playing at least one musical instrument. अब binomial की conditions क्या होती हैं? एक तो आपके पास discrete outcomes हो, number of students की बात हो रही है, that's discrete. कोई चीज repeat होनी चाहिए और आपको n पता होना चाहिए. n पता है आपको? It's 12, right? और फिर नंबर ऑफ सक्सेसेस की बात हो रही है. 2 आउटकम्स आप किस तरह से आप कर सकते हो. अब एटलीस्ट वन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर हम एक आउटकम रख लें तो दूसरी क्या होगी कि जो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज करता, तो हम इसको 2 आउटकम्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं. बट देयर इज अनदर कंडीशन, एंड दैट इज कि प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो कांस्टेंट रहनी चाहिए. प्रोबेबिलिटीज चेंज नहीं हो सकती हैं. क्या इसमें प्रोबेबिलिटी चेंज होगी? If you think about it, आप 12 students choose कर रहे हैं. जब आप first student choose कर लेंगे, तो उसके बाद second student choose करने की probability logically क्या होनी चाहिए? कम हो जानी चाहिए, right? Because एक student तो आपने choose कर लिया, अब total number भी जो भी था उस college में, वो भी एक number 1 कम हो गया, right? और फिर जो बाकी students जो आपकी condition को satisfy करते हैं वो भी कम हो जाएंगे. It doesn't look like कि probabilities constant रह रही हैं. लेकिन
आपने देखा होगा रीसेंट पेपर्स में अक्सर ना ये वर्ड यूज करता है कभी कभी, इट सेज इन अ लार्ज कॉलेज, इन अ लार्ज कॉलेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लार्ज कॉलेज की बात हो रही है, इसका मतलब है दिस कॉलेज हैज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेट्स से कॉलेज हैज 30,000 स्टूडेंट्स। अब उनमें से आप एक निकाल भी लेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आपने देखे 12 स्टूडेंट सिर्फ आपने इसमें से चूज करने हैं, तो अगर एक प्रोबेबिलिटी लेट्स से 12 आउट ऑफ समथिंग है 20,000, ओके, अब उसमें से एक आप निकाल लेंगे तो कोई खास आपकी प्रोबेबिलिटी उसकी चेंज नहीं होगी। इनफैक्ट 12 आउट वो नहीं, 12 पर तो चेंज हो सकती है 28%। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल कहें 20,000 है, उसमें से लेट्स से 4,000 ओवर 20,000 ये एक नंबर है। अब एक निकाल भी लेंगे तो नेक्स्ट टाइम क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 3999 डिवाइडेड बाय 19,999। आप देखेंगे ये नंबर्स जो है ना कोई खास डिफरेंट नहीं है, अगर आप उसको कैलकुलेटर में डालें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो जब कोई नंबर आपके पास बहुत लार्ज हो और उसमें से आप कुछ चूज कर रहे हो, तो उसमें आप ये अज्यूम कर सकते हो कि जो प्रोबेबिलिटी का जो डिफरेंस है ना वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, कोई बहुत खास चेंज नहीं हो रहा। तो आप कहते हो कि प्रोबेबिलिटीज कांस्टेंट ही रह रही हैं, प्रोबेबिलिटीज पर चेंज नहीं हो रही, दैट्स व्हाट यू अज्यूम। नाउ लेट मी जस्ट शो दिस टू यू। हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ये कंडीशंस होती हैं। Assuming that it's a large college, ये सारी conditions meet हो जाती हैं। फिर n repeated trials है और n आपको पता है क्या है, n is specified। 12 times आप students choose कर रहे हो, दो outcomes में आप उसको convert कर सकते हो। probabilities जो है वो constant रह रही हैं। हम कह रहे हैं assuming कि ये large college है तो probabilities हम कह सकते हैं change नहीं हो रही, उनमें कोई खास change नहीं आ रहा। ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम इसको एज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मुलेट कर लेते हैं। इसमें सक्सेस कैसे डिफाइंड होगी इस बाइनोमियल के अंदर, सक्सेस इज डिफाइंड एज दिस, playing at least one musical instrument. This is what success is, playing at least one musical instrument. So what's the probability of success going to be then? n तो हमें पता है 12 चूज करना है, 12 times आप students चूज कर रहे हो, so that's n is equal to 12. What's the probability of success? At least one musical instrument जो students यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, अब देखें उसने कहा 52% प्ले एग्जैक्टली वन इंस्ट्रूमेंट एंड द रिमाइंडर प्ले टू और मोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये दोनों केसेस इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, दोनों केसेस, राइट? एग्जैक्टली वन वाला भी और वन से ज्यादा भी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास यहाँ पे क्या आएगी, 52% और जो रिमेनिंग है जो भी होगा, 28% ये है, 52% ये है, तो रिमेनिंग जो टू और मोर प्ले करते हैं दैट इज 0 पॉइंट और 20%। दिस इज रिमेनिंग परसेंटेज इज 20%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, 52% प्लस 20%, दैट्स गोइंग टू गिव यू 0.72, 72% और 0.72। अब ये भी कर सकते थे वन में से ये माइनस कर दें तो आपके पास ये आ जाता। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दैट्स 1 minus this and that's 0.28. You have the value of n, you have the value of p and q, you have these values. What are we looking for now? We are looking for the probability that more than 9 of these students play at least one musical instrument. तो हमें कितनी successes चाहिए? We want more than 9 successes, so we are looking for a probability of x greater than 9. ठीक है, x का क्या मतलब है, number of successes, we want greater than 9 successes. रिमेंबर बाइनोमियल में हमारे पास इनइक्वालिटी को फिगर आउट करने के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, हमें अलग अलग इवेल्युएट करनी पड़ती हैं। टोटल 12 हैं, अब कितनी सक्सेसेस हो सकती हैं, 9 से ज्यादा। यू कुड आइदर हैव 10 सक्सेसेस आउट ऑफ 12 और यू कुड हैव 11 सक्सेसेस और यू कुड हैव 12 सक्सेसेस। ये तीन केसेस की जो प्रोबेबिलिटीज आएंगी इनको आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है बाइनोमियल का, इट लुक्स लाइक दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ x equals r, that is equal to ncr p raised to power r into q raised to power n minus r. We're just going to input values in that and see what you get from this. N is 12, so that's 12c
10 into P, which is 0.72 raised to power 10 into 0.28 raised to power 2. Do the same thing for the other two cases. And that is going to give you 12C11 into 0.72 raised to power 11 into 0.28 plus 12C12 into 0.72 whole raised to power 12 into 0.28 whole raised to power 0. Evaluate this and see what this turns out to be. Okay, so this is going to turn out to be okay, let me just evaluate this. Okay, so this turns out to be 0.304. That's your final answer that you get from this. You can write down the final answer directly. If it's correct, you will get full marks. You don't have to show working. But if it turns out to be incorrect, फिर आपको partial marks ज़्यादा मिल जाएंगे अगर आप एक स्टेप और शो कर दें और इन तीनों की कैलकुलेशंस अलग अलग शो कर दें ताकि आपको उसका नजर आ जाए अच्छा दो सही हैं एक में शायद कोई कैलकुलेशन एरर हो गया but if you are sure your answer is correct you can write down the final answer directly and that is going to be acceptable. Okay, you'll get full marks if the final answer is correct along with this working of course. ये working show करनी है उसके बाद फिर आप आंसर लिख सकते हैं. Let's move on. Part B of this. It says a random sample of 90 students from the college is now chosen. And we need to use an approximation to find the probability that fewer than 40 of these students play exactly one musical instrument. Now, approximation जो है आपके syllabus में सिर्फ एक ही है, that's binomial to normal approximation. Now, that means it's originally a binomial distribution. आपने इसको approximate करना है as a normal distribution. Binomial distribution के parameters क्या होंगे? यहाँ पे उसने कहा sample of 90 students is now chosen, so n is equal to 90. What about probability of success? Probability of success and failure, they're going to change as well. You see, यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है? Find the probability that fewer than 40 of these students play exactly one instrument. Your success criteria is now this. Playing exactly one instrument. So probability of success अब change हो जाएगी. Exactly one instrument वाले कितने लोग हैं? 52%. So probability of success now is 0.52. Probability of failure is 0.48. आपको find क्या करना है? आपको find करना है probability of fewer than 40. That means x less than 40. ये probability आपको figure out करनी है. ठीक है? अब क्या करेंगे इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर लें. नॉर्मल में आपको क्या चाहिए होता है? मीन चाहिए होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होती है. मीन इज गिवन बाय np. लेट्स इवैल्यूएट दैट. 90 into 0.52. What does that turn out to be? 90 into 0.52, that is giving me 46.8. This is the mean of that normal distribution. What about the standard deviation? Standard deviation is given by npq and then square root of that. This will turn out to be 90 into 0.52 into 0.48 and then square root of that. Yeah, it's better to leave it in square root form ताकि आपके final answers जो है वो ज़्यादा accurate आ रहे हो. ये evaluate करते हैं 90 into 0.52 into 0.48. This is giving me 22.464 and then square root of that. This is your standard deviation. So you have the mean and you have the standard deviation. ये दो चीजें आपने figure out कर ली normal distribution की. Now you also have to do continuity correction. X less than 40 है. आपके पास ये discrete वाले केस में ये आता है. जब इसको normal में convert करेंगे, since that's a continuous distribution, you have to do continuity correction. So what you do in such cases is you look at these numbers. 40 है तो इसके आसपास वाले numbers हम देखेंगे 39, 40 and 41. अच्छा 39 include होगा? Yes. Okay, वो less than 40 है. 40 include होगा? नहीं होगा because 40 के साथ equal to का sign नहीं लगा हुआ. 40 नहीं include होगा. 41 भी of course नहीं होगा. आपने क्या करना है?
टिक मार्क और क्रॉस मार्क के जो दरमियान में आपने मिडिल पॉइंट ले लेना है. यू वुड से द कट ऑफ इज गोइंग टू बी बिटवीन 39 and 40. 39 और 40 के दरमियान में कट ऑफ होएगा. दैट इज गोइंग टू बी 39.5. तो ये जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके, दैट इज गोइंग टू बी x लेस देन 39.5. दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी आर गोइंग टू लुक फॉर. ठीक है, ये अब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल लेंगे. क्या करेंगे, सबसे पहले इसको z में कन्वर्ट करेंगे. इट इज गोइंग टू बिकम z लेस देन 39.5 माइनस द मीन इज 46.8 divided by the standard deviation, which is square root of 22.464. And this gives us, let's figure this out, 39.5 minus 46.8 divided by square root of 22.464. Okay, I'm getting z less than minus 1.540. Now, is this the standard form? क्या हम table use कर सकते हैं अभी? It's not the standard form. The standard form that we need for normal distribution is z less than a positive number. That's the only form that the table recognizes. ये तो negative number आ गया. अब आप क्या करेंगे उस form में convert करेंगे इसको किसी तरह से. How do you figure this out? Your curve is going to look like this. आप कर्व का सोचेंगे फिर से, दरमियान में 0 होता है. माइनस लेफ्ट साइड पर आ रहा होगा माइनस 1.540. यू आर लुकिंग फॉर दिस रीजन. अब ये रीजन तो हम नहीं निकाल सकते टेबल से. हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको फ्लिप कर लेते हैं. इसको फ्लिप करके हम ले आते हैं इस जगह पे. सो वी कैन से दिस एरिया इज द सेम एज the area to the right of 1.54. ठीक है, ये एरिया उस यही होएगा. अब ये भी आप डायरेक्टली नहीं फिगर आउट कर सकते बिकॉज इसमें ग्रेटर देन का साइन आ गया, आपको लेस देन साइन चाहिए. तो आप क्या कर सकते हैं, 1 में से माइनस कर दें इसके लेफ्ट साइड वाला सारा रीजन. 1 में से माइनस कर दें z लेस देन 1.540. नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. ये जब जाके टेबल से देख सकते हैं 1.54 जाके वैल्यू देखें z की टेबल में, उसे कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फिगर आउट कर लें. लेट्स हैव अ लुक एट दिस. 1.540 टेबल में किधर आ रहा है. Okay, 1.5, so that's 1.5, then 4. Third decimal place 0 है वैसे, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं ऐड करना. This is the value that we have, 0.9382. Let's write that down here. 0.9382. We need to subtract that from 1 and see what that turns out to be. This is going to turn out to be 0.0618, and that is the probability that we were looking for here. ठीक है, ये आपने binomial to normal approximation यूज करके ये वाली वैल्यू फिगर आउट कर ली. Let's start with this permutation and combination question. Now, this is one of the most difficult questions that you will find on permutations and combinations in the past papers. Not all of it, but just one particular part of it. So I actually spent a lot of time last year, quite some time last year on this, right after the exam, solving this. And I posted a video on that as well. And later, when the marking scheme came out, I was pretty disappointed because they had a different answer. But it turned out they revised that marking scheme recently. Or the answer did not really make any sense. Anyway, let's begin with this. In the first part, it says, find the number of different arrangements of the 9 letters of the word crocodile. Now, that's pretty straightforward. How many letters do we have here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we have 9 letters. We have to find their arrangements. 9 letters ki arrangements kya hogi? 9 factorial, but we have to see if we have any repeated letters. So we have C, we have 2 C's here. That's 2 factorial. And then we have O and O. So we have 2 O's there. That's 2 factorial more. And that's it. We have 2 repetitions. So that's 9 factorial over 2 factorial into 2 factorial. And you can see what this turns out to be, 9 factorial over 2 factorial and 2 factorial. This is going to give you 90720. That gets you 1 mark in the first part. Let's look at the second one.
Now it says find the number of different arrangements of the 9 letters in the word crocodile in which there's a C at each end and the 2 O's are not together. Okay, now C should be at each end. So there are 9 letters in total. If we use that boxes representation that we use sometimes, let me have that here. So we have these boxes. There are 9 letters, so we need to have 9 boxes in total. So it's going to look like this. You have these 9 boxes. अब देखिए इसने कहा C's जो हैं वो ends पे हैं. इसका मतलब है एक C यहाँ पर होना चाहिए, एक C यहाँ पर होना चाहिए. इनको तो आपने फिक्स कर दिया. There are only 2 C's और वो आपने यहाँ से eliminate कर दिया. They're already fixed on the sides. अब दरम्यान में 7 letters रह गए हैं. उसमें उसने कहा है कि जो O's हैं वो साथ नहीं होने चाहिए. Now, how do you make that sure that the O's are not together? Now, there could be multiple ways of doing this. One possibility is कि आप total number of arrangements निकाल लें जिसमें O साथ हो या ना हो, हम कुछ वो consider नहीं करें. Total arrangements in 7 letters की क्या होंगी? C's तो fixed है ना, उनको नहीं छेड़ना आपने. वो तो sides पे fixed हैं, वो तो यहाँ पे कहीं पे consider करने की जरूरत नहीं है. उनके तो कोई arrangements नहीं है. They are identical as well. Remaining letters that we have are R, O, O, D, I, L, E. इनकी arrangements कितनी हो सकती हैं? 7 letters, 7 factorial. 2 of them are identical. We have 2 O's. So we are going to have to do 7 factorial over 2 factorial for that. ये आपकी total arrangements होती हैं अगर हम कहते कि कोई भी condition O's के ऊपर नहीं है. लेकिन अब उसने O's पे condition लगा दी है. वो O's पे क्या condition है कि O's जो हैं वो एक साथ नहीं हो सकते हैं. तो आप क्या कर सकते हैं, O's के साथ होने वाला केस आप फिगर आउट कर लें कि उनके साथ होने के कितने केसेस बनेंगे, उसको इसमें से टोटल में से सबट्रैक्ट कर दें तो आपके पास सारे वो वाले केसेस रह जाएंगे जब O's टुगेदर नहीं है. Now what is that case going to look like? Let me just draw that here, or maybe I can just copy this. ये आपने फर्स्ट केस बनाया है जिसमें कोई कंडीशन O's पे नहीं लगाई है. अगर आप अब O's पे भी कंडीशन लगा दो तो उसमें क्या हो जाएगा, हम साइड पे यहाँ पे कर लेते हैं. अगर O's पे कंडीशन लग जाएगी तो इसका मतलब ये है कि दोनों O's को हमें एक बॉक्स में डालना पड़ेगा. ये 7 बॉक्सेस हैं, O's को हम एक बॉक्स में डाल देंगे, 2 बॉक्सेस को मर्ज करके उसमें हम O's डाल देंगे. सो वी हैव 2 O's टुगेदर नाउ. अब इन 6 बॉक्सेस को मूव करवाना है, इनकी अरेंजमेंट्स देखनी है, इनकी कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, 6 फैक्टोरियल. और फिर O's की तो कोई भी अरेंजमेंट्स नहीं होंगी बिकॉज O's तो आइडेंटिकल हैं. तो इसमें से हम माइनस कर देंगे जो टोटल अरेंजमेंट्स थी, हम 6 फैक्टोरियल माइनस कर देंगे. दैट इज गोइंग टू गिव अस द रिजल्ट. ऑलराइट, 7 factorial over 2 factorial minus 6 factorial. This is going to give us the result, and let's see what this turns out to be. This is giving me 1800. Okay, that's the number of arrangements that satisfy this condition. हमने total find कर लिया O's पे condition लगाए बगैर कि this is basically total वाला case minus the case where the O's are together. That is what we are using here. ठीक है, that was the part B of this. Let's move on. Part C says 4 letters are selected from the 9 letters in the word crocodile. Find the number of selections in which the number of C's is not the same as the number of O's. अच्छा देखिए अब क्या बात कर रहा है, वो selections की बात कर रहा है. Remember, selection का मतलब है कि order matter नहीं करता. तो this is combination, right? Combination में जो repeated letters होते हैं ना, उनका बड़ा मसला होता है. उनके ना आपको cases बनाने पड़ते हैं, उनके साथ direct deal करने का कोई तरीका नहीं होता. तो जो repeated letters हैं उनके आपको cases बनाने पड़ेंगे. अब कौन कौन से letters repeat हो रहे हैं? We have C coming twice. तो एक आप बना लें कि अच्छा C के क्या cases हो सकते हैं, वो हमें देखने पड़ेंगे. और हमारे पास O, वो भी रिपीट हो रहा है. 2 C's हैं और 2 O's हैं. बाकी कोई भी रेपिटेशन नहीं है. तो बाकी लेटर्स आपके पास कितने बचे? यू हैव 5 रिमेनिंग लेटर्स अपार्ट फ्रॉम दैट.
सो अदर लेटर्स, इसको अब मैं अक्सर एक्स से भी डिनोट करता हूँ. दीज आर द अदर लेटर्स दैट वी हैव. दे आर 5 इन टोटल. अब आपको देखने हैं क्या आपके डिफरेंट केसेस बन सकते हैं जो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ ओज और नंबर ऑफ सीज जो है वो सेम नहीं हो सकता है. और आपको कितने लेटर सेलेक्ट करने हैं? टोटल 4 सेलेक्ट करने हैं. टोटल 4 सेलेक्ट करने हैं. और ओज और सी का सेम नंबर नहीं होना चाहिए. अच्छा, ये हो सकता है क्या दोनों जीरो हो जाएं? वो भी तो सेम नंबर हो जाएगा, दोनों में कोई भी नहीं आ रहा. सो दैट वुड बी जीरो जीरो. वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दैट केस. ठीक है, तो क्या केसेस कंसीडर करें फिर? यू कैन हैव, let's say there's no C and one O. That's one possibility. तो बाकी आपको 4 letters total करने हैं. The other letters will have to be 3. अच्छा, अब फिर O's, C अगर आप 0 ही रहने दें, O's अगर आप 2 कर दें, तो बाकी कितने letters हो जाएंगे? 2 रह जाएंगे. ये 0 C के साथ ये आपके पास 2 cases बन गए. अच्छा, अगर 1C हो जाए, 1C के साथ you could have either 0O and then the letter 3, and the other letters could be 3, and then you could have 2 C's and maybe 1O. That's another possibility, right? बाकी letters कितने होंगे? वो 1 होंगे. ये आपके पास 2 के साथ 2 केसेस. अच्छा, इसको ना ऑर्डर में लेकर चलते हैं. लेट्स एक्चुअली नॉट यूज दिस केस, इसकी बाद में लिखते हैं. 0 0 में पहले लिखा था, 1 वाले केसेस कर लें ताकि ना वो मिस ना हो रहा. ओके, 1 वाला और केस कौन सा हो गया? 1 हो गया. और इसमें ओ क्या हो सकता है? एक तो इसमें 0 हो सकता है, वो हमने कंसिडर कर लिया. 1 ओ नहीं हो सकता, 2 हो सकता है. उसमें रिमेनिंग लेटर्स कितने हो जाएंगे? फिर 1 रह जाएंगे. 1 वाले केसेस आपने कर लिया. अब 2 वाले केसेस देख लें. अगर C2 हो तो ओस कितने हो सकते हैं? यू कैन हैव नो ओस. दैट्स वन पॉसिबिलिटी. रिमेनिंग लेटर्स विल हैव टू बी 2. या आपके सी हो जाए 2 और ओस कितने हो जाए? 1 हो जाए. और बाकी रिमेनिंग लेटर 1 हो जाए. यू हैव दीज 6 केसेस दैट यू हैव. इन 6 केसेस के आपको नंबर ऑफ पॉसिबल वेज फिगर आउट करने हैं और उनको ऐड कर देना है. ठीक है. अच्छा, देखें, सीज तो आइडेंटिकल हैं, ओज भी आइडेंटिकल हैं, तो इनमें तो हमें कोई सिलेक्शन नहीं करनी है सच, राइट? 2 में से कोई भी सी नहीं सेलेक्ट करना, तो वो तो खैर वैसे ही कोई मसला नहीं है. लेकिन 2 में से एक भी सी सेलेक्ट करना हो, इट डजंट रियली मैटर बिकॉज बोथ ऑफ देम आर आइडेंटिकल. इसके कोई केसेस नहीं बने, इसके कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे. इसमें आपको 2C1 करने की जरूरत नहीं है. इसमें आइडेंटिकल है, तो ये हमने एक तरह से बस ये कहा है कि C2 रखनी है, ओ इतने रखनी है. इनमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं लगाना है बिकॉज सीज और ओज आपस में, वो सीज आइडेंटिकल है और ओज आइडेंटिकल, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. जो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज आपके पास बनेंगे वो अदर लेटर्स के बनेंगे जो सारे यूनिक लेटर्स हैं. तो अगर आपने 5 में से 3 लेटर्स चूज करने हैं, वो कैसे होएगा? यू वुड से इट्स 5C3. ओके, 5 में से फिर आपने 2 चूज करने हैं, दैट्स 5C2. देन अगेन 5C3, 5C1, 5C2 एंड 5C1. ये आपके पास सारे केसेस आ गए. 5C3 10 होता है, दिस इज ऑल्सो 10, दिस इज 10. 5C1 is 5, 5C2 is 10 and 5C1 is 5. All you have to do now is just add all of these cases up and that will give you the total 30, 40, 45, 50. So the total turns out to be 50. Okay, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस आ गए इस केस के अंदर. Let's move on and finally get to that part. It says find the number of ways in which the 9 letters in the word crocodile can be divided into 3 groups, each containing 3 letters, if the 2 C's must be in different groups. Okay. अब देखें, उसने कहा है 9 letters in total. You are dividing them into 3 groups. Groups की बात हो रही है. अब groups में order तो matter नहीं करता. This is combination, right? They're talking about 3 different groups. Right? इसमें permutation नहीं है. This is combination. That's the first thing. अब 3 groups बनाने हैं, तीनों के अंदर 3 letters होने चाहिए. So it's going to be something like this. Let me do that here. So we have 1, 2, and 3. We have these 3 groups made here. ठीक है, ये 3 ग्रुप्स आपने बनाने. अब उसने क्या कंडीशन दी है? आपने 3 ग्रुप्स ऐसे बनाने हैं
कि जो दो सीज हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में होने चाहिए, दो सीज डिफरेंट ग्रुप्स में होने चाहिए। ठीक है, अब रिमेंबर जब भी कॉम्बिनेशन आते हैं ना, जो रिपीटेड लेटर्स है ना, ये बहुत मसला करते हैं, इनके आपको केसेस बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब दो सीज तो उसने कहा है कि डिफरेंट आपने उसमें रखने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे अच्छा एक सी अगर मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, दूसरा सी इधर प्लेस करना पड़ेगा किसी और ग्रुप के अंदर। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज बहुत मैटर करती है, एक केस अगर ये बना रहे हैं हम, तो लेकिन आपकी जस्ट कॉपी दी है क्योंकि हमें और चाहिए होंगे, तो मैं यहाँ पे ना कॉपी करके रख लेता हूँ, बहुत टाइम वेस्ट होएगा इस पे। अच्छा देखें, ये दो डिफरेंट केसेस नहीं है कि अगर आप फॉर इंस्टेंस एक सी इधर रखते हैं, एक फर्स्ट ग्रुप में रख लिया और एक सेकंड ग्रुप में रख लिया, और फिर आपने एक इसमें रखा और एक इसमें रखा, दे आर नॉट डिफरेंट केसेस, दे आर द सेम केसेस। क्योंकि देखें ग्रुप्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ये फर्स्ट केस और सेकंड केस इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, राइट, बिकॉज आपने सी को एक को यहाँ पे रखा हुआ है, एक को यहाँ पे रखा है, दो डिफरेंट ग्रुप्स में आ रहे हैं ना, इधर भी दो डिफरेंट ग्रुप्स में है, इधर भी दो डिफरेंट ग्रुप्स में है, ग्रुप्स का कोई ऑर्डर तो नहीं है, ये दोनों सेम ही केस है, इनमें कोई आप ये डिफरेंट केसेस नहीं है। ठीक है, तो आपने बस सीज को इस तरह से दो ग्रुप्स में अलग अलग डाल देना है। अब क्योंकि वो मैटर नहीं करता कि कौन सा पहला ग्रुप है, कौन सा दूसरा ग्रुप है, कौन सा तीसरा ग्रुप है, नंबरिंग नहीं है कोई इसके अंदर, तो ये दो अलग ग्रुप में सीज को रखना सी वाले केसेस को ऑलरेडी हैंडल कर लेगा। अब दूसरा मसला क्या है, आपके पास ओज भी रिपीट हो रहे हैं, दैट्स अनदर प्रॉब्लम दैट वी हैव, ओ जो है ना ये भी मल्टीपल आ रहे हैं, ओज के भी आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। अब ओज के केसेस क्या हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी फॉर इंस्टेंस हो सकती है कि दोनों ओज जो है वो एक सी के साथ आ जाए, राइट, दोनों ओज एक सी के साथ आ जाए। ठीक है, एक पॉसिबल केस ये बन गया, तो आपको एक सी और ओज के केसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, वो हम बना रहे हैं सी और, क्योंकि वो दो रिपीटेड लेटर्स है ना, उनके केसेस बनाने पड़ेंगे। एक केस हमारे पास ये हो गया पहला कि हमने सीज को अलग बॉक्सेस में रखा और दो ओज को एक सी वाले बॉक्स में डाल दिया। अब और केस क्या हो सकता है, रिमेंबर हम ये नहीं कर सकते सी ओ ओ, क्योंकि ये दोनों सेम ही केस हो जाएंगे, अगेन बिकॉज ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये केस और ये केस इसमें सेम ही हो जाएंगे, क्योंकि एक सी के साथ दो ओज है और एक के अंदर सिर्फ एक सी है, दीज आर नॉट डिफरेंट केसेस, दीज आर द सेम केसेस। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप एक ओ एक सी के साथ रख लें और दूसरा ओ दूसरे सी के साथ रख लें, दैट्स अनदर पॉसिबल केस यू कुड हैव। ठीक है, नाउ व्हाट एल्स कुड यू डू हियर, एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, दो सीज तो हमने अलग अलग रखे, अब ओज को आप एक ओ एक सी के साथ रख लें, एक सी वाले बॉक्स में एक ओ को डाल दें और एक ओ को तीसरे अलग बॉक्स में डाल दें जिसमें कोई भी सी नहीं आ रहा, दैट कुड बी अनदर पॉसिबिलिटी। ये आपके पास एक और केस बन गया। कुड देयर बी अनदर पॉसिबिलिटी फॉर प्लेसिंग ओ, एक ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप लास्ट बॉक्स में दो ओज डाल दें कि वो किसी भी सी के साथ नहीं आ रहे हो, ये भी पॉसिबल है। So you could have one more case, and that would be कि ओस जो है वो किसी सी वाले बॉक्स में नहीं आते, वो एक आपने अलग ही बॉक्स में डाल दिया, जो तीसरा बॉक्स बच गया जिसमें कोई भी सी नहीं है, उसमें आपने दो ओस डाल दिए। These are the four different cases that you get from this. सीज को तो आपने अलग अलग बॉक्स में डाल दिया, वो तो कंडीशन हमने शुरू में डाल दी। अब ओस जो है या तो वो दोनों किसी एक सी वाले बॉक्स में आ जाए, या एक एक करके स्प्लिट हो जाए, या एक सी वाले में आ जाए और एक रिमेनिंग बॉक्स में आ जाए, या दोनों ही रिमेनिंग बॉक्स में आ जाए। दीज आर फोर केसेस दैट वी हैव। अब इन सारों के आपको देखना पड़ेगा कि क्या केसेस बनते हैं। अब देखिए फर्स्ट केस में ये तो आपने बॉक्स ऑलरेडी फिल कर लिया हुआ है, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो सी ओ ओ आ गया ऑलरेडी। मेंबर अरेंजमेंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ
ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें अरेंज कुछ भी नहीं करना। सेकेंड बॉक्स में देखें, यू हैव सम रिमेनिंग स्पेस। यहाँ पे आपने 2 लेटर्स और प्लेस करने हैं। कितने बाकी रिमेनिंग लेटर्स हैं? 5 लेटर्स हैं। सी, नो सी तो हमने कर लिया प्लेस। RDILE, दीज आर द 5 रिमेनिंग लेटर्स। 5 में से कोई भी 2 आपने यहाँ पे प्लेस करने हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू दैट? 5C2, राइट? और फिर 3 रह जाएंगे, उन तीनों को यहाँ पे आपने प्लेस कर देना है। That's just 3C3. That's going to give you the number of cases that you have for the first case. Okay? अब इसी तरह से आप सेकंड केस में देखें। सेकंड केस में क्या होगा? यहाँ पे आपके पास एक लेटर और है, और की जगह बाकी 5 में से कोई भी एक लेटर यहाँ पे प्लेस कर देंगे। दैट मीन्स 5C1, 5 में से कोई भी एक लेटर यहाँ पे इनपुट करना है। उसके बाद एक लेटर पर यहाँ पे प्लेस करना है। कितने रिमेनिंग लेटर्स हैं? 4 रह गए। 4 में से कोई भी एक आपने इसमें डाल दिया। एंड देन यू हैव 3 रिमेनिंग लेटर्स, वो लास्ट बॉक्स में आ जाएंगे। दैट्स गोइंग टू बी 3C3. बट यहाँ पे एक और कॉम्प्लिकेशन है। एक और कॉम्प्लिकेशन क्या है? लेट मी एक्सप्लेन दैट। सो अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस ये आ रहा हो, इस बॉक्स में डी आ जाए। अब देखें बाकी 5 लेटर्स इन बॉक्सेस में इस तरह से प्लेस कर रहे हैं ना, तो अगर इस बॉक्स में डी आ जाए और इसमें लेट्स से आर आ जाए और बाकी में ILE आ जाए, दिस इज वन पॉसिबल केस। तो ये क्या ग्रुप्स बनेंगे आपके? COD, COR एंड ILE, ये 3 ग्रुप्स बन गए। लेकिन अगर ये हो जाए, R इसमें आ जाए और D इसमें आ जाए और ILE इसमें आ जाए, ये क्या ग्रुप्स बन गए आपके? COR, COD एंड ILE। ये तो वही केस दोबारा से आ गया आपके पास। तो इसमें मसला क्या है? ये सेकंड केस में ना 2 ग्रुप्स इस पॉइंट पे आइडेंटिकल है, CO तो इनमें कोई भी थर्ड लेटर आएगा ना, अगर वो R और D है लेट्स से, तो उसकी जो ऑपोजिट अरेंजमेंट होगी D और R, वो तो आपको सेम ही चीज दोबारा दे रही होगी। तो उसको आपने एलिमिनेट करना है, बिकॉज वो डबल काउंटिंग हो रही है। तो इस पूरे को क्या करना पड़ेगा? आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से। ओके, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से, या 2 से डिवाइड कर दे, बिकॉज उसके 2 अरेंजमेंट्स है ना। तो 2 अरेंजमेंट्स हम किस तरह करते हैं? फैक्टोरियल से। तो हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया कि ये जो 2 केसेस आपके पास आ रहे होंगे यहाँ पे जो डबल काउंट हो रहे हैं, वो आपने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, लेट्स लुक एट द थर्ड केस। देखिए फर्स्ट केस में प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज हमारे पास ये 2 आइडेंटिकल केसेस नहीं बन रहे थे, तीनों डिफरेंट बॉक्सेस बन रहे थे, तो उसमें वो मसला नहीं था। अच्छा, थर्ड में देखते हैं। यू हैव 1 space remaining here, that's going to be 5C1. You have 2 spaces remaining here, that's 4C2. And then you have 2 spaces here, that's going to be 2C2. ये आपके पास कुछ आ जाएगा। फिर लास्ट केस देखें, you have 2 spaces here, that's 5C2. And then 2 spaces in the next one, that's going to give you 3C2. And then 1 space in the last one, that's 1C1. अब लास्ट वाले में भी वही मसला है। लास्ट वाले में क्यों वो मसला है? बिकॉज यहाँ पे भी 2 बॉक्सेस ऐसे हैं विच आर आइडेंटिकल एट दिस पॉइंट। ये भी C है, इसमें सिर्फ CR है, इसमें भी सिर्फ CR है। तो अगर आपकी एक पॉसिबल अरेंजमेंट होती जिसमें हम पहले वाले बॉक्स के साथ R और D डाल देते और दूसरे वाले के साथ I और L डाल देते, तो अगर पहले वाले के इसमें IL डालें और दूसरे वाले में RD डालें, तो ये तो वही केस दोबारा से आ गया, बिकॉज ग्रुप्स तो आपके वही बने फिर, राइट? ग्रुप्स तो आपके वही 3 बन जाएंगे। तो ये आपके पास दोबारा से फिर वो डबल काउंटिंग हो रही है। तो इस लास्ट केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा? इस डबल काउंटिंग को एलिमिनेट करने के लिए यू वुड हैव टू डिवाइड इट बाय 2 फैक्टोरियल। इस पूरे को आपको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ऑलराइट, आई होप दैट मेक्स सेंस। यू हैव दीज 4 केसेस, इनको अब ऐड करेंगे और आप देखेंगे आपके पास क्या आता है। फर्स्ट केस निकालें, 5C2 into 3C3, 5C2 is 10, या आपको 10 आ गया। सेकंड केस देखेंगे, 5 into 4, that's 20, 20 over 2 is 10 as well. सेकंड केस में भी 10 आ रहा है आपके पास। थर्ड केस, 5 into 6, 30, 30 into 1, that's 30, and the last one is 10, 3, 30, 30 over 2 is 15. Last case is giving us 15. And the result turns out to be 20 plus 30, which is 50. 50 plus 15, that is 65. 65 is the result that we get from this.
Okay. Now, those of you who have any older marking scheme, if you try this later, उसमें उसने 80 रखा होगा. As I told you earlier, वो गलत है. उन्होंने बाद में update कर दिया था इसको, और वो 65 है. This answer is actually 65. Okay, so that's the last part of this. Now let's be quick and see if we can do the last question as well. Let's see how much time do we have. Okay, let's be very quick about this. Last one. Hannah buys 12 hollow chocolate eggs that each contain a sweet. The eggs look identical, but she knows that 3 contain a red sweet, 4 contain an orange sweet, and 5 contain a yellow sweet. Okay, so we have 12 boxes, 12 eggs. 3 have a red sweet, 4 have an orange sweet, and 5 have a yellow sweet. Each of Hannah's 3 children, in turn, randomly chooses and eats one of the eggs, keeping the sweet it contained. Find the probability that all eggs chosen contain the same color sweet. Okay, now how do we figure this out? Same color sweet ho un sab ke andar. अब क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी? आपके पास रेड, ऑरेंज और येलो, ये 3 कलर्स हैं. या तो तीनों के अंदर रेड आ रहे हैं, एक ये पॉसिबल केस है, या तीनों के अंदर ऑरेंज आ रहे हो, या तीनों के अंदर येलो आ रहे हो. ये 3 केसेस हैं. तीनों में रेड की क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? फर्स्ट टाइम इट्स गोइंग टू बी 3/10, second time it's going to be 2/11, and the third time it's going to be 1/10. इनको multiply करेंगे, get a result from this. That's going to be 3 over, यहाँ पे फर्स्ट में 12 होना चाहिए था, टोटल 12 थे, 3/12. ओ में क्या होगा? 4/12 फर्स्ट टाइम, और फिर सेकंड टाइम 3 ऑरेंज रह जाएंगे, so that's 3/11, and then you have 2/10. And in the last case, yellow, first time 5 out of 12 probability होगी इसकी, second time 4 out of 12 हो जाएगी, third time it's going to be 3 out of 12. या तीनों multiply कर लें, उनको add कर लें, you'll get the total probability. That's pretty straightforward compared to the last one. The first one is going to give you 6 in the numerator, and this is 1320 in the denominator. The second one is again 1320 in the denominator, and the numerator is 12 into 2, that's 24. The last one is going to be 1320 in the denominator again, and that is 16 the numerator. Add all of them up and see what that gives you. ये आपके पास आ जाएगा 3/44. Okay, you can write this in decimals as well. That will be 0.0682. That's the first part here. Yellow is wrong. 5 into 4. I think that's okay. Okay, let's move on. Part B of this. Find the probability that all 3 eggs chosen contain a yellow sweet, given that all 3 have the same color sweet. ये अब conditional probability आ गई है, right? Probability that all contain a yellow. So it means that it's the yellow wala case, given that all of them are same. इसमें क्या करते थे? Probability of the intersection, तीनों yellow and all same, इनका intersection divided by probability of all being the same. Yellow वाला केस हमने ऊपर निकाला है, वो क्या आ रहा था? It was yellow वाला केस, yeah, 60/1320. ये न्यूमरेटर में रख देंगे because वो इंटरसेक्शन भी है ना दोनों का. ये आप न्यूमरेटर में रख लें. 60/1320, divide that by probability of all being same, that was 3/44. इसको उससे डिवाइड कर दें. ये आप देख लें आपके पास क्या होता है. ठीक है, this turns out to be 2/3. That's the conditional probability that we are looking for in the second part here. Okay, let's move on to the last one. The last one says, find the probability that at least one of the 3 children chooses an egg that contains an orange sweet. Okay, at least one of the 3 children chooses a sweet that contains chooses an egg that contains an orange sweet. अब इसमें बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, लेकिन इसका आसान तरीका ये है
कि आप ये करें एटलीस्ट वन, या सो आप ये कर लें कि प्रोबेबिलिटी कि किसी के भी ऑरेंज स्वीट नहीं है, राइट? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो नन नो चाइल्ड चूजिंग ऑरेंज, ये आप फाइंड कर लें और टोटल में से वन में से माइनस कर दें, बिकॉज फिर बाकी केसेस क्या होंगे जिसमें एटलीस्ट एक ने ऑरेंज चूज की होगी। तो नो चाइल्ड चूजिंग ऑरेंज वाली प्रोबेबिलिटी निकाल लें। इसका क्या मतलब है? ऑरेंज स्वीट्स कितनी है? ऑरेंज स्वीट्स हमारे पास हैं 4, तो नॉन ऑरेंज कितनी होंगी? 8। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फर्स्ट की 8/12, सेकंड की 7/11 और थर्ड की 6/10। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी of none of the children choosing orange. Let's see what this turns out to be. 8/12 into 7/11 into 6/10. This turns out to be 14/55. Now, what's the probability that at least one of them chooses an orange sweet? What is this going to be? 1 में से ये minus कर दें. That will give you the result. And that's pretty quick. That's 41/55. That's the result that we get in this. Okay, so ये बाकी क्वेश्चन तो उसने एक तरह से वो परमिटेशंस कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए लगता दिया है। सो फर्स्ट 3-4 क्वेश्चंस भी काफी आसान थे, फिर दरमियान में 5 शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, the rest were pretty straightforward. Okay. Oh yeah, I'm sorry about that. मैं गलत वैल्यूज यहाँ पे लिख दी. So you're right about that. You're right about that. Let me just correct this. इंडिविजुअल मैंने वैल्यूज गलत लिख दी हैं. So कैलकुलेटर पे आप वही डालेंगे जो ऊपर 12, 11 and 10. So these are wrong. Yeah, thank you for that. Okay, all right. So ये आपके पास result आ जाएगा. That's the last question. That's it for today. I'll see you again tomorrow. Tomorrow कल हम क्या करेंगे? किसी जो बाकी पेपर्स रह गए हमने करना क्या है इस सेशन के मई जून 2022 के जो बाकी पेपर्स रहते हैं उनमें से हम सिर्फ मुश्किल वाले क्वेश्चंस करेंगे इन द रिमेनिंग सेशंस. द नेक्स्ट 4 days आर गोइंग टू बी स्पेंट ऑन दिस. जो बाकी दो पेपर्स हर दो वेरिएंट्स हर पेपर के रहते हैं उनके मुश्किल वाले क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे. कल हम मोस्ट लाइकली M1 या S1 के दोनों में से एक करेंगे. आई विल पोस्ट दैट as post on YouTube and also on Instagram.